Good evening, students. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. So let us start our topic. So in the last class, we were discussing about curriculum planning, curriculum transaction, and evaluation. In this sense, we can say that curriculum it is a tool utilizing which teacher gives instruction to the students, construct knowledge on the part of our students. This curriculum is very important tool because it provides us information regarding what to teach and what should be the difficulty level of our content. Not only we are getting information regarding what to teach, what type of content or concepts we have to teach, some types of guidelines also we are getting through this curriculum or syllabus. What type of learning experience we have to design for our students, what type of teaching learning materials we should use, some type of guidelines for teachers it is also provided to the students through this curriculum. So curriculum is a very important resource for teaching and learning. In this sense, we have to also understand this process of curriculum planning, curriculum transaction, as well as curriculum evaluation. Okay, so we have to understand what type of curriculum we have to use. Sometime we have to plan different new types of concepts that should be included in the curriculum. As a expert, as a teacher, we have to also provide feedback to different system, and as per that we have to design the curriculum. So you can find that this curriculum planning is a process in which participants at many levels makes decision about what purposes of learning ought to be and how these purposes might be carried out through teaching learning situation, and whether the purposes and means are both appropriate and effective. So curriculum planning consists of all the process necessary to plan for and write a curriculum. Curriculum planning is the process of gathering, sorting, selecting, balancing, and synthesizing relative information from many sources in order to design those expresses that will assist learners in attaining the goals of the curriculum. So, whenever we are framing curriculum, we are deciding our objectives after implementation of this curriculum, what types of learning behavior or learning expected learning outcomes we want to achieve on the part of our students. Those things also we are deciding. In addition to that, different types of concepts we are selecting on the basis of different information we have collected from different sources, from different feedbacks. As per the new education policy, we have to select those content as per the demand of the society. We have to select our content and include it in our syllabus. In addition to that, views of teachers, views of students, learners, as well as teacher educators, administrators, everything we have to consider whenever we are preparing for curriculum. Okay, so we have to gather, sort, select, analyze, balance, and finally we have to construct the whole syllabus for our students. So curriculum planning is a very systematic process which requires lots of preparation on the part of human resource, on the part of expert group, and the part of research. After going through different steps, we can prepare the plan. So curriculum planning can be of different types.
immediate curriculum plan we can also organize, or long term type of curriculum renewal or planning we can also make. So some types of curriculum, whenever we are changing the whole syllabus, we have to change the textbooks, we have to change the different learning resources, guidelines, everything we have to change. So that is a very long term type of curriculum planning. And whenever we are teaching inside the classroom, at that time we are feeling that we have to change our curriculum due to the demand of the society or due to the immediate revision of the situation. We have to create new syllabus or curriculum. At that time, immediately we teachers, we add some new concepts to the syllabus, or new activities we are designing and including those things into our syllabus. So it's a kind of immediate curriculum planning or in immediate review process. Okay, so this type of things we have to consider whenever we are planning for preparing curriculum. Then coming to the curriculum transaction. So it's a very important part for the teachers to transact curriculum, whatever given in the syllabus, what type of instruction given in the syllabus, they have to practically implement inside the school or classroom. So here we have to, sorry. So here we have to think about different ways to implement curriculum, and this is a process of curriculum transaction where we are implementing our curriculum in the class practically. So curriculum transaction, it also requires many preparation, many collection of different data, collection of different resources, and different guidelines also we are following whenever we are transacting curriculum. So ଯେତେବେଳେ ଆମେ curriculum को classroom रे implementation କରୁଛେ ତାକୁ କୁହା ହେଉଛି curriculum transaction. This process incorporates effective planning for providing learning experience for its learners, organization of planning, administration, implementation of the organized planning, and evaluation of the implementation by the implementer and the experts in the relevant field. So here, whenever we are transacting curriculum, we have to also follow some systematic steps. So it is not possible for us to just haphazardly enter into the classroom and teach something or give some information to the students. Rather, it's a very planned activity, it's a very planned and systematic activity. So that is why we teachers, we have to prepare different lesson planning we have to make. We have to prepare unit plans. केमती आमे यूनिट टी को ट्रांजैक्शन करिबा, केमती आमे गोटे पीरियड रे पाठ पढेबा, तार गोटे रिटन डॉक्यूमेंट हमको डेवलपमेंट करिया को पड़ता है, where we have to also mark the concepts we want to teach, those methods we are using for implementing this syllabus, or we have to also give timeline केते समय भितरे आमे पढेबा, कोन सु पढेबा, सब लेसन प्लान रे हमको लेखिया को पड़ता है. आउ ता सहित मध्य we have to plan regarding our teaching learning materials, we have to plan regarding our methodologies, activities, scholastic, co-scholastic experiences we have to design, and after that we can implement it. So without any preparation, we should not enter into the school or classroom. Without any proper lesson plan, it is not possible for us to teach properly in the classroom. So curriculum transaction, it requires organized plan, and we have to also check whether our students have modified their behavior as per the instructional objectives or not. Okay, and implementation is very important by the teachers. They have to also understand in which way they are going to interact with the students,
in which way they are going to teach. Everything they have to consider. Okay, so curriculum transaction, it is a very systematic process. Okay, anything else you want to tell? Eta unit 9 ରେଟା ଅଛି curriculum. यूनिट 9 रे अछि तुमरा ब्लॉक 3 जोटा रही MES 14 रो ब्लॉक 3 रो यूनिट 9 आमे पढुचे करिकुलम प्लानिंग करिकुलम ट्रांजैक्शन से विषय रे किछि किछि देछि बही रे. ओके, सो इवैल्यूएशन विषय रे मध्ये किछि आइडिया देछि जेमति इवैल्यूएशन इज द कलेक्शन ऑफ एनालिसिस एंड कोन इवैल्यूएशन त माने कोन बुझिछो इवैल्यूएशन माने कोन Evaluation is the assessment of teaching. Assessment and judgment of students learning also. So it is a process of collection of analysis and interpretation of information about any aspect of a program or teaching learning as a part of recognized process of judging its effectiveness, its efficiency and only other outcome it may have. So केते मात्रा रे हमरो पाठ पढ़ा सक्सेसफुल हला ताहाको आमे को वे रे मेजर करथाय ताको गोटे जजमेंट करथाय से वेट हला से इवैल्यूएशन जजमेंट गोटे प्रोसेस सेउतरे आमे जज करिबा जे गोटे पिला केते मात्रा रे जो पाठटी पढ़ाला तो केते मात्रा रे ताको से जानि पारला बुझी पारला बा ता रिलेटेड किछि एप्लीकेशन एनालिसिस ताको यूज करिवार एबिलिटी केते डेवलप हला ता भितरे बा को प्रकार स्किल ता भितरे डेवलपमेंट हला ए सब विषय रे आमे इवैल्यूएशन थ्रू रे जानि थाए. सो दैट इज व्हाई at the end of the lesson we have to also evaluate the students. What are those steps of lesson plan no steps सब कोन को माने बीएड करछ एजुकेशन मैम रो 50 करथि Engagement, exploration. तापरे explanation, evaluation elaboration, evaluation. लास्ट रे हला जो हमरो evaluation. So different types of processes are there. सेइतरे सबुटु लास्ट रे हमर इवैल्यूएशन रहउची where we have to judge whether our instructional objectives have been achieved by our learners or not. सेतिकी objectives से माने बा सेही भलिया पाठ पढाइबार जहा हमर उद्देश्य थिला से गुडी को ठीक से आमे ताकू अटेंड करि पारले कि नै बा से गुडी को सक्षम हला कि नै पिला बुझी पारला कि नै पिला ठीक से ताकू जानि पारला कि नै ताकू स्किल रे ताकू यूज करि पारला कि नै ए सब विषय रे आमे ताकू विभिन्न प्रकार क्वेश्चन पचारि कि ना आमे श्योर हेइ थाए. सो इवैल्यूएशन इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट फॉर करिकुलम ट्रांजैक्शन. देन इवैल्यूएशन तुम जानथिबो डिफरेंट टाइप्स रो इवैल्यूएशन अछि फॉर्मेटिव समेटिव डायग्नोस्टिक प्लेसमेंट. सो बिफोर इंस्ट्रक्शन आमे पिला को धर गोटे टेस्ट करबा को भलिया पिला अछंती को माने हाई अचीवर लो अचीवर ताकू प्लेसमेंट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन कहबा. फॉर्मेटिव माने ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन मझी मझी रे गोटे सरप्राइज टेस्ट कर देबा यूनिट टेस्ट कर देबा एई भलिया फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. डायग्नोस्टिक कोडी डिफिकल्टीज रहिछि पाठ पढिबारे ताकू जानिया पाई डायग्नोस्टिक टेस्ट करबा. समेटिव टाइप कोन समेटिव टाइप कोन इवैल्यूएशन कोन Class year ro end रे हेतै summative at evaluation. the end of End the of the year. year or session after the instruction सब सरी गला परे पाठ पढ़ा आमे गोटे समरी देखिया जे पिला केते बुझी पारला बा केते पढिला बा केते सिखिला ए विषय रे मध्ये आमे आइडिया करि थाउ. ओके, आउ मध्ये कांसेप्ट तुमरो रहिछि टीचर एज ए मेंटर. सो मेंटर माने की हु इज द मेंटर mentor we can say monitor leader the mentor means Mentor is a guide. So teacher's role has been changed from only instructing the students
Rather, he or she is considered as one of the monitor of students' learning. He has to monitor students' learning by continuous testing the students, continuously discussing with the student in a friendly manner. He has to guide the student, counsel the student, and in that way she or he has to prepare a good human being for the society. So guidance and counseling can be done systematically through different session. Okay, so teacher mentor गोटे रिलेशनशिप आमे डेभलप करिपारिबा जोथरे कि पिला तार प्रॉब्लम कहि पारिबो कोठी से पाठ बुझी पारुची कोठी बुझी पारु नै. सो जनरली आमे क्लासरूम रे जरे पाठ पढाई थाए सब पिला इंटरेक्शन करि पारि न थांती ସେମାନେ କିଛିଟା ବୁଝିଥାନ୍ତି କିଛିଟା ବୁଝି ନଥାନ୍ତି କିଛିଟା ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ସ ରହିଯାଇଥାଏ ସେଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଥାଏ ବା ପର୍ସନାଲ ଲେଭେଲରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେଟା ସେମାନେ ସେୟାର କରିପାରି ନଥାନ୍ତି କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲା ବା ଅଲଗା କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲା ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି କୋଉଠି ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରି ନଥାନ୍ତି ସୋ ଦେ ଆର୍ ଫିଲିଂ ଭେରି ହ୍ୱାଟ lonely and they are getting some type of disturbance in their process of teaching in their process of learning. So सेठी आमे कोन करिवा गोटे मेंटर को जेमती ताको सब बेले मॉनिटरिंग करूथबो ता कथा बुझुथबो कोन पाठ पढार असुविधा हला ताको सब बेले सिस्टमैटिकली काउंसलिंग करथबो एई भला जने टीचर मध्य हमर आवश्यक. सो सेठी पय देखियो सो स्कूल गुडी करे सब स्टूडेंट मान को मध्य डिवीजन करा जाउची क्लासिफाई कराइची समस्त किछि किछि 5टा 6टा पिला को गोटे गोटे टीचर्स को अंडर रे रहिया पय कुहा होची सो दैट से 5-6 जन को दायित्व टीचर्स नेबे आउ सेमान को मध्य किछि काउंसलिंग करिवे सेमान को सब बेले मीटिंग करिवे फ्रीक्वेंट मीटिंग विल बी ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द मेंटर एंड मेंटी they can discuss with each other they can give their feedbacks they can also express their problems and doubts to the mentor and mentor will try to help them to solve all those problems सेटा गोटे डायरेक्ट रिलेशनशिप हम टीचर एंड टॉट भितरे हमें क्रिएट करि परिबा whenever we are playing the role of a mentor. So parent, teacher, student, community all are very much related in this process of teaching and learning. You can see this picture that samaste parents mane teacher student samaste community सहित मध्य समस्त गोटे रिलेशन रहुची ता थ्रू रे आमे एजुकेशनल एक्टिविटीज को आगो को नहीं परिबा. Teacher and community. So there lies some relationship between teacher and community also. Teacher must work with the community towards upholding our constitutional values of democracy, secularism, social justice, elimination of poverty, and eradication of illiteracy. So teachers are not only teaching inside the school, but also they are considered a social reformer. They are the social reformer. They transform the society, they bring out changes in the society by working with community. They can also interact with different types of people at grassroots level and they can also transform or uphold the constitutional values of democracy, secularism, social justice inside the community. Also they are also helping others to eliminate poverty. केमती आमे poverty इकोनॉमिकल कंडीशन केमती भलो हबो ता ऊपर मध्य से माने सहायता करथांती किछि वोकेशनल ट्रेनिंग मते देथांती. Eradication of illiteracy, adult education programs are also organized where teachers are also teaching the adults who are unable to move into the school. जोटा तमरा इवनिंग स्कूल गुडा को हेइथा सेठी मध्य सेने पढै थांती कम्युनिटी रे मध्य किछि अडल्ट जो माने किछि आगरु पढी पारि नथले सेमान को मध्य पाठ पढै पारि थांती. सो डिफरेंट काम हम एक्सटेंशन एक्टिविटीज रे करि परिबा केवल स्कूल रे पाठ न पढै किना कम्युनिटी को मध्य सर्व करि परिबा. सो स्टेट apparatus जोता हमें कथा होतले लास्ट क्लास रे मध्य स्टेट apparatus they are considered as state apparatus were used as portals of cultural reproduction by powers of dominance. Teachers as state functionaries here come under pressure to become agents of reproduction of culture. So इतरे मध्य जितरे आमे नुआ किछि रिनाइंसा आनिया पई चाहूचे टीचर्स माने मध्य कल्चरल रिप्रोडक्शन
କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଆଗରୁ ଥିଲା ସେସବୁ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ପିପୁଲ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆଣିବାକୁ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବାକୁ ଅଛି। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଫ୍ ଇଜି ପାଥ୍। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ଆସିବ, କିଛି ଡୋମିନାଣ୍ଟ ପିପୁଲ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିବେ, ବଟ୍ ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଏ ଫେଭରେବଲ ଡିରେକ୍ସନ। ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭଲସେ ଗୋଟେ ରହିପାରିବେ, କିଭଳି କରପସନ ହବ ନାହିଁ, କିଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସିବ ନାହିଁ ସୋସାଇଟିକୁ, ସେଇ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ they can work with the marginal group and they can give voice to the group of these people from periphery. A teacher who is an agent of social change starts this process in the classroom by giving learners voice, helping them to find their voice and making classroom process participatory. So this process starts social service. It starts from the classroom itself, where they give courage and some type of encouragement or reinforcement to the little citizen of our country, where they can get some type of reinforcement so that they start participate in different cultural activity. They start raise their voice, they can express their feelings, they can discuss with each other, and they become one responsible citizen of the country in future. So it is not only to do dominate our classroom students, it is our duty as a teacher to help them to express their views, express their point of view. And in this sense they will learn how to raise voice against violence, against certain type of corruption, or any kind of dominancy in society. Then only equality can be achieved. If we teach our learners to become partial and marginalized by silently sitting inside the classroom, then only we are reproducing the culture of dominancy in the society. They would learn the culture of inferiority inside the classroom, and that will be also reproduced in the society in the next generation. So it is very important for the teachers to help students to raise their voice and participate in different types of discussion, different types of co-curricular activities, curricular activities, and in that way teachers can be also successful in reforming our society. So ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇଛି ଟିଚର ଆଉ କମ୍ୟୁନିଟି ସର୍ଭିସ ଏଇ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆମର ରିଲେସନସିପ୍ ରହିଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ। टीचर as a state apparatus, you can consider teachers are the state apparatus, where Secondary Education Commission has said that we have already referred to the importance of the teacher's social status. There is a growing feeling that the lead in the matter should be taken by the persons in high public position, who should show special recognition of the status and dignity of teachers and treat them not on the basis of their salary and economical status, but on the importance of nation building work that is ensured to them. So we should not consider teachers as only some kind of person in the society who are teaching. Rather, they are the nation builder. As per Secondary Education Commission 1952-53, they are the nation builder. Okay, so they are building the nation by creating good human resource for our society. They must also be consulted in all important matter pertaining to education so as to strengthen their sense of professional responsibilities. So it is very important that we have to convince them that you have some certain kind of professional responsibility for your society, for your children. So you should work properly, we should work competently, and in this way only we can create good nation, can create developed India in our society. About the social status and moral of the teachers, the Education Commission also noted that
the efficiency of teaching profession and its contribution to national development in general and educational improvement in particular will depends largely on its social status and moral. So teaching profession and its efficiency, and its contribution to national development is solely dependent on the development or improvement of the teachers. Okay, and their social status and moral values also controls our society. जेमती टीचर आमे गढ़िबा, जेमती टीचिंग प्रोफेशन पाइका आमे जेमती टीचर तैयारी करिबा, एजुकेशनिस्ट तैयारी करिबा, तांको मानिको सोशल स्टेटस आ मोरल वैल्यू से माने केते वैल्यू तांको बा एथिक्स तांकर किभଳି अछि से निश्चित भाबरे समाज को निश्चित भाबे प्रभावित करिवो. जदि टीचर सेल्फिश हेबे, जदि टीचरंकर लो मोरल वैल्यूज रहिबो, तांकर भितरे गोटे भल वैल्यू रहिबो नै, प्रोफेशनलिज्म भल रहिबो नाही, निश्चित भाबरे आम समाज मध्य अधोगति हबो. ओके, निम्नमुखी हबो. काहेकि सेमाने सेही भलिया सोसाइटी तैयारी करिवे, सेही भलिया पिला तैयारी करिवे. जो माने टीचर से मानकु तो रोल मॉडल ना, से माने तू देखि किना टीचर्स माने ही पिला माने ही से माने बढ़ी थांते. सो से माने जदी से माने टीचर्स माने जदी सेही भलिया सेल्फिश हेबे बा सेल्फ सेंटर्ड हे की पढ़िबे बा करप्टेड हेबे, निश्चित भाव सोसाइटी मध्ये ताकटू सेही जिंस सिखिबो, पिला माने मध्ये सेही भलिया जिंस सिखिबे एवं सोसाइटी मध्ये सेही भलिया तयारी हबो. सो देयर इज ए positive relationship between the social status and moral values of our teachers with that of the society and its development. बुझिएला? Yes ma'am. Ma'am टिके 144 स्लाइड टिके देखिबे. It is the relationship between the parent, teacher, student and community. किभଳି समस्ते परस्पर सहित परिपूरक, केमती इंटर रिलेटेड से विषय रे एथरे दिया हेची. स्टूडेंट आउ पेरेंट्स, टीचर्स आउ कम्युनिटी समस्ते किभଳି परस्पर सहित रिलेटेड फॉर द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. बुझिएला? Yes ma'am. ठीक अछि. So this is the end of your unit 9. तापरे अछि तमरा teaching profession unit 10. Okay, unit 10. So teaching is a profession, and you know that teacher are very the role of teacher in this process of building society or nation is very crucial. You know, we understood relationship between teacher status and moral values with that of the society. So in this sense we are considering teaching as a profession. Okay, so what is a profession? Ke kahibo? प्रोफेशन कौन? व्हाट इज ए प्रोफेशन? प्रोफेशन के ऑक्युपेशन जोडा कि हमें गोटे पैसा पाई बा हमें भाबे ड्यूटी भाबे करथांती, किंतु प्रोफेशन जोडा कि निजर इंटरेस्ट थाए सेटा को हमें ब्रॉड सेंस रे नो बा सेटा को हमर कोनोसी मनी क्षेत्र तुलना न करा जाय कि तार केमिति बेस्ट हे परिवो से कामटा बा केमिति लर्निंग बेस्ट हे परिवो, आउटकम हम अधिका पाई परिवो, सेटा को हम प्रोफेशन कहया टीचिंग रे. So profession is a kind of occupation where we are giving more importance to values and ideals of that particular activity or service. Okay, some type of common ideals are there, common values are there for practicing that particular occupation.
सो ऑक्युपेशन व्हेन बिजनेसमैन हेबे आउ के हेबे से माने एते के रिस्पांसिबल नहंती केवल निज प्रॉफिट ही देखिबे but profession that is very much related to society and upliftment of society, improvement of society, okay, serving the society. So in this case in your material also you can find different types of concepts like ଏଇଥିରେ ତମର locating the education, major components of education, defining profession, education structure, understanding education in different aspects से विषय आमे discussion करिवा. So locating the education, so where this education lies, so that is very important. So children, they are having natural tendency to learn at very young age. They are learning, they are engaged in different types of material situation or activities where they are learning, and we people, we are the family, we are helping them to learn something. We from family neighborhood, they are trying their best to learn something. So education starts from the very young age of the child, and whenever we are formally trying to implement our education, we have to take the help of school teachers. They are the agent of formal education, okay. So systematic requirements in education are of various kind, like planning, teacher preparation, program evaluation, assessment, management, organizational structure, and community support. So systematically, whenever we try to implement our learning process for our children, we have to take admission into school, and the school, in school we are planning the sessions of teaching learning, we are preparing teachers program, we are evaluating our students, assessment also we are doing, and managing, organizing our education system or structure effectively, as well as we are also taking the help of community. Say bisare eiti dechi. Okay, so it is also this educational knowledge is also related to different disciplines like philosophy, sociology, political process, economical condition, ए सब विषय को नेकी तैयारी हेची. So education is a transdisciplinary subject, and the vision of education and its development becomes necessary to conceptualize education and its process. So what are those major components of education? ता ऊपर मध्य किछि देइछि बहिरे. Education रो main components कोन? So गोटे होछि तमर vision of education and its development. So whenever we are planning to implement education, we have to first understand its vision. Vision means what is visualizing for social transformation. आमे कोन आमे देखि परिबा सोसाइटी रे आमे को प्रकार चेंजेस आनिया पई चाहूछु फ्यूचर रे, सेईटा को देखिबा हला हमर एजुकेशन रो गोटे विजन. आगो को आमे देखिबा. Vision of education requires the visualization of our social transformation first. को भले सोसाइटी आमे तयारी करिया को चाहूछु, को भले सोसाइटी आमे करिया को चाहूछु. जदि आमे गोटे सोसाइटी तयारी करिया को चाहूछे जे जेमती आमे कहि पारे गोटे पीसफुल सोसाइटी तयारी करिया को चाहूछे, तो हमर विजन मध्ये सेही भलिया रहिबो जे गोटे पीसफुल सोसाइटी करिया पई का हमकु एजुकेशनल एक्टिविटीज को डिजाइन करिवार अछि. सो विजन गोटे निश्चित भाबरे हमर गोटे ब्रॉड विजिबिलिटी प्रथमे गोटे एजुकेशनिस्ट को देखिया को पड़ी थाए वर्तमान स्टेटस कोन आउ को भले एजुकेशन आमे देबा, सेईटा को नै कि आमे कहि पारिया जे आमे एजुकेशन को ट्रांजैक्शन करि परिबा. And second segment of education is the process of education, which is the operational part. So visibility is a theoretical part, it's a imagination. हेई पारे न हेई पारे, तुमे जे चिंता करि पारो एमती मु करबी सेई भलिया मु ट्रांसफॉर्मेशन आनिबी, तो मोटा को गोटे ब्रॉडली देखुची, this is a theoretical part. But actually whenever we are operating this educational activities in the grassroots level or at the school level, then it is considered as the process of education. Okay, so here in this part, role of the teacher is very, very important. And
we have to teacher in this process determined by the developmental consideration. Okay, जो भले vision आमे नेइथिले ताकू केमिति से practically achieve करिवो. Okay, सेइटा ही हमर main उद्देश्य रहिबो teaching बा process of education रे, and that is mainly achieved by the teachers. Okay, so in this process teachers has to facilitate the learning, and teacher has to create such teaching situation that the students participate in the process of teaching learning. Okay, so that they can create meaning of situation and thereby students can learn. So we have to create such a type of environment, academic environment in the school as a teacher, so that our students will learn meaningfully. Without rote learning, they can learn meaningfully in a deep manner. They can learn, and they can learn systematically, practically, by participation and by engaged in different types of activities. This type of goals or visibility can be achieved. So it is very important that they have to design learning experiences for the students. They have to design different types of teaching learning environment in the school, as well as guide the students as a facilitator. For a facilitator, ame jodi kahiba, who is a facilitator? What is the Teacher. difference? What is the difference between teaching and facilitating? मैम टीचिंग मीन्स प्रोफेशनली पढ़ेवा, फैसिलिटिंग माने पिला मानन को कोडे वीकनेस रहउची तांको हेल्प करबा, तांको आंसर कहिबारे समर्थ कराइबा, सेटा फैसिलिटेट करबा, नॉट के निजे कहि दबा आंसर, सेटा निजे आंसर कहि देला टीचिंग हे गेला. So facilitation means we have to provide certain kind of resources to our students. Different types of resources we have to provide to our students. Academic environment we have to create where the role of the teacher is partial and students are the active learner. Okay, actively engaged in different activities, and they learn by themselves by organizing different types of group work or like that. किछि group work से माने करिवे एवं ता थ्रू मध्ये से माने किछि पढि परिवे. So now coming to the profession. What is a profession? So इथरे मध्ये किछिटा description देइछि, जेमति engineer, doctor, teachers, managers are called professionals. Now definition जदि आमे कहिबा जे सेइथरे मध्ये किछिटा देइछि, जेमति people professional require some sort of specialized knowledge and skill which the group of people must possess to qualify them as distinctly different from the others. So professionals like doctor, engineer, manager, teachers, they are called the professionals because they are having specialized knowledge and skill which the group of people must possess to qualify them and which is different from the others. Such skill and knowledge may depend on the type of activities they are required to perform. So किछिरे special skill, competency और knowledge सेमान को पाखरे रही थाए. They are having some type of service mentality or social service mentality in their ethics. They are having common objectives and ethical consideration. किछिटा रूल्स रेगुलेशन को सेमाने फॉलो करथांती आउ सेमान का पाखरे किछि नॉलेज आउ स्किल रही था. जेमति कि टीचर्स, they are also considered as professional because whenever they are teaching inside the school, they are performing some certain kind of skill, teaching skill they are performing there. Teaching skill, different types of teaching skills सेमान को दरकार पड़ी था एवं सेटा को सेमाने गोटे टैक्टफुली ताको ऑपरेट करि थांती. सो गोटे जदि आमे कहबा गोटे ट्यूटर से गोटे टीचर हेई न पारे, केवल ट्यूटर बोली आमे कहि परिबा, कारण सेई भला तार पाखे बीएड डिग्री थाई पारे न थाई पारे, बा स्पेसिफिक डिग्री और क्वालिफिकेशन हेले ही तमे सेई प्रोफेशन को आसी परिबो. जदि जन ट्यूटर पढौछंती तमे कहि परिबो नै जे से मध्य
जदि बीएड करी नाही ताले तमे ताको टीचर कहि परिबनी कारण जने जदि बीएड करिछि ताहले ही से जने टीचर बा बीएड बा सीटी जदि करिछि ताहले से भलिया प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ता पाखरे रहिथिबा कथा जदि से पास कला ताहले ही सोसाइटी ताको बा अथॉरिटी ताको अपॉइंटमेंट करिवो टीचिंग जॉब रे इन स्कूल सिचुएशन फॉर्मल एजुकेशन रे ताको दबो जदि ता पाखे से प्रोफेशनल क्वालिटीज नाही डिग्रीज नाही ताहले ताकू सेठी जॉब दिया जाई परिबो नाही ताकू आमे कहि परिबा नै से गोटे प्रोफेशनल जदियो से बाहर पढू ट्यूशन करू जहा करू किंतु से गोटे टीचर बोली सोसाइटी केबे ताकू अप्रूव करिवो नाही तो गोटे डिग्री निश्चित भाबरे थिबो गोटे प्रोफेशनल डिग्री तार सेइतरे दरकार जेंती डॉक्टर तमे कहबो डॉक्टर निश्चित भाबरे प्राइवेट प्रैक्टिस करंतु बा गवर्नमेंट प्रैक्टिस करंतु जहा भी करछन ताको गोटे एमबीबीएस डिग्री थिबो जदि नाही ताकू केबे भी मध्य कोनोसी अनुष्ठान रे कोनोसी मेडिकल एजेंसी ताकू कोनोसी प्रकार रिक्रूटमेंट देबे नाही जदि डिग्री अछि ताहले ताकू सेट्री अलाउ करा जिवो प्रैक्टिस करिया पय कोर्ट रे लॉ जदि तमे गोटे वकील होबा को चाहत निश्चित भाव रे एलएलबी डिग्री टे निश्चित भाव थिबा कथा सेमती मैनेजर होबा को चाहछ एमबीए डिग्री निश्चित थिबा कथा न हेले तमे सेठी कोनोसी प्रकार जॉब तमे करि परिबो सो यू आर नॉट कंसीडर्ड एज वन टाइप ऑफ प्रोफेशनल so it requires some specific skill and knowledge some specific competencies you have to utilize in your field of job okay से गुडी को मत तुमको यूज करिया को पड़िबो अच्छा so another thing is there in your book that is like related to educational structure so जोटा हमें मध्य कहउथिले डिस्कशन करथले इंडिया रो एजुकेशनल स्ट्रक्चर एबे रिसेंटली चेंज हेची एटा टिके पुराना बही सेति पई सेतिरे मध्ये टिके अलगा प्रकार देची जेमति प्री स्कूल एजुकेशन एलिमेंटरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन हायर सेकेंडरी एजुकेशन हायर एजुकेशन और टर्शियरी एजुकेशन सो पुराना बही बोली सेही भलिया स्ट्रक्चर देची किंतु वर्तमान कोन हलानी कोन सब स्टेज हमें लास्ट टाइम पढिथिले कोन सब एनईपी अनुसार कोन सब स्ट्रक्चर हे जाईची मैम फाउंडेशनल प्रिपरेटरी मिडिल सेकेंडरी यस फाउंडेशनल 5 वर्ष तापरे 4 वर्ष तमरो केते नहीं मैम 5 3 प्लस 3 प्लस 3 3 4 5 3 4 रहिला त 4 5 हला प्रिपरेटरी आउ तापरे तमरो मिडिल ला 2 वर्ष हला 6 आउ 7 8 3 वर्ष सॉरी 3 वर्ष आउ गोटे तमर रहिला 4 वर्ष तो एई भलिया चेंजेस आछि so we have to divide structure is like that we have to divide this whole education system into different part and higher education tertiary level after plus 2 or after class 12 we are considering that is under the tertiary level or the higher education जोटा हमें 12th क्लास स्कूलिंग सरी गले कॉलेज लेवल को जीवा कॉलेज लेवल सरी गले यूनिवर्सिटी लेवल को जीवा सही भलिया okay so education was largely through socialization process of family and community however different types of factors like caste system religion economic status and families are also associated with the education जोटा की से माने सोसाइटी रे डिफरेंट डाइवर्सिटीज गुडी को रही थाए सेति पय का से माने गोटे केवल गोटे इंडिविजुअल घरे रही की पाठ पढ़ले केही गोटे सोशल सोसाइटी विषय जानि परिबे नै तो सोशल कंडीशन रे ही एजुकेशन टाकू आमे इम्प्लीमेंटेशन करी थाए से विषय डिस्कशन करा हेची सो पेडागोजी आमे जेतेले यूटिलाइज करूचे सोशली सेंसिटिव पेडागोजी or pedagogy means what the method of teaching different subjects so whenever we are teaching we are utilizing pedagogy in the classroom the way art or science of teaching any subject so whenever we are teaching we are using some artistic skills as well as some scientific outlook also we are utilizing there in addition to that those pedagogy must be associated with certain kind of social values or it should be sensitive to society so in this concern we have to use sociology whenever we are teaching any subject maybe mathematics maybe science maybe
history, geography, whatever you are teaching. It's not a matter. But you should use concepts of sociology there. You have to utilize equality. You have to apply the rules of equity, acculturation, organizational structure. ये सब विषय को तुमको importance दबाको पड़िबो. So some theories of sociology also offer explanation to educational process at macro level. Okay, broader framework रे आमे तांको पाठ पढेइबा sociological thoughts, concepts एगुड़िक मध्य आमे यूज करिबा से विषय दिया हैछि. ओके, ता ऊपर डिस्कशन कराइछि केमती आमे एजुकेशन आ सोशियोलॉजी ताकू यूज करिकिना पाठ पढेइबा माइक्रो लेवल रे, मैक्रो लेवल रे. So education is very much dependent, pedagogy or education is dependent on sociology, knowledge, understanding, everything. We have to utilize our theoretical concepts and principle of sociology. विषय पढ़िबो. तापरे मध्य आउ किछि कॉन्सेप्ट्स देइछि जेमति अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन भाया different levels like teaching to infants teaching सार गोटे भाग देइछि सेमानकर सोशल सोसाइटी कि भଳି था इन्फांट्स मानकर माने इन्फांट्स माने आमे कहबा छोटो पिला केतरु केते वर्ष माने 2-3 वर्ष सेही भितरे 2 वर्ष भितरे तो सेमानकर कि भଳି सोसाइटी रहिता तांको कि भଳି बारे पाठ पढेबा प्री स्कूल बा अर्ली स्कूल जोटा रहिछि बा वर्तमान फाउंडेशनल स्कूल जोटा हबो सेइथरे तांको मध्य एडमिशन करिया पे कुहा होची घरे की रही परिबे नै 3 वर्ष रु समस्त स्कूल को जिबे एवं प्री नर्सरी बा प्ले ग्रुप रे से समय से माने किछि खेली किना सिखिबे सेमानकर सब पाठ पढा शैली कि भଳି हेता इन्फेंट मानकर के कहबो केमते से माने पढी थांती ମାନେ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଣିବା ମାନେ ମାନେ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ବଣ୍ଡିଂ କରାଯାଇକି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁର କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲା ମାନେ ତାର ମନେ ରଖିବା ଇଏଟା ବଢିବ କାପାସିଟିଟା. So they are so yes. କରିକି ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନମ୍ବର ମନେ ରଖି ପାରିବା. So their teaching style is very different from the adult or secondary school students or primary school students. They are very young students, so we have to utilize different types of learning resources, attractive colors, different types of games we have to organize, different types of equipments also you have to use. And in this case also teachers have to behave differently, very lovingly, and the teachers have to behave caring, loving teachers are required. Okay, and they also require some certain kind of respect. जदि तमे तांको ठीक से कथा न हबो ताले समेन कोन चिंता कांदिबे आउ समय जे हठात सोसाइटी को आसी थांती गोटे फैमिली को छाड़ी कि आसी थांती पिला स्कूल को जीवा को भी चाहि न थांती कांदी थांती टीचर्स को सही टाइम रे ही हेल्प करिया को पड़ी थाए प्रथमे. सो जो मन को छोट पिला थिबो तमे सेतरे जानि पतु से प्रथम दिन जतरे स्कूल को जाइथिबो कि भलिया सिचुएशन हेई थाए से टाइम रे प्रथमे मां को छाडु नथि बापा को छाडु नथि कांदी किना गडुथिबे रूम रे कांदुथिबे बसी किना तो सेही टाइम रे किए हेल्प करिवो सेही टाइम रे केवल टीचर्स माने ही से टाइम रे गोटे सोसाइटी रे से माने ही हेल्प करथांती ताकू गोटे भलो एनवायरनमेंट देई थांती जोठी से माने पाठ पढिबे एवं सिखिबे फ्रेंडशिप करिबे. So not only the content knowledge is provided to them but also how to behave, what are the socially preferred behavior, and it can be also achieved through the socialization process. So socialization means friendship kariba, tiffin sharing kariba, eka sange basiki khaiba, eka sange prayer kariba, eka sange re misiki katha barta haba, kiछि पाठ पढिबा, शेयरिंग करिबा बा कोनसी जगह को बुलिया को जिबा, गेम्स बा प्ले करिबा, किछि खेल खेलिबा, एई भलिया किछि एक्टिविटी आमे पिला को करै थाउ जोठी कि तांकर फास्ट
सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है आउ से शिखी था मैनर्स शिखी था वैल्यूज को शिखी था आमको एमती धर एग्जांपल आम एमती क्लासरूम रे डटी करवानी किसी कौन सी प्रकार जिनस पकईबानी मैला करवानी कागज फोपाड़ानी आम गोटे डस्टबिन अच्छी क्लासरूम रे से समस्त डस्टबिन फोपाड़ सो से वैल्यूज गुड़िक आम शिखई थाए छोटे छोटे पिला एवं धीरे धीरे से प्रैक्टिस करे हैबिट रे परिवर्तन होता है आ धीरे धीरे डिसिप्लिन होता है स्कूल गला से सब सोसाइटी रे रही परस्पर को इमिटेशन करिकिना कौन टीचर कहते से छोट पिला इमिटेट करता अनुसार मिमिक्री करता अनुसार से चाहिए दे आर द रोल मॉडल फॉर मी सो से भाया से चेष्टा करता है किसी डिस्कशन यही पार्ट रे पढ़िबो then creating learning experiences for our students जोटा कि डिस्कशन आम करथिले डिफरेंट एज ग्रुप रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस हमको दबा को पड़ी था लर्निंग एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटीज फर्स्ट वी हैव टू एंगेज आवर स्टूडेंट्स विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज एंड थ्रू दोज एक्टिविटीज स्टूडेंट्स गेन सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस किछि अनुभूति से माने करिथांती बाय पार्टिसिपेटिंग इन दोस प्रोग्राम्स किछि आमे तांको पार्टिसिपेट करेबा डिफरेंट एक्टिविटीज रे सेमान को एंगेज करेबा एवं सेही जेतले सेमाने मिसी थांती दलगत कार्य हो बा इंडिविजुअल वर्क हो जहा भी हो सेत्रे सेमाने किछि अनुभूति आनी थांती सो सेडा किभଳି हबो ता विषय किछि डिस्कशन कराई छि जेमति कि सेंसरी मोटर फेज हां ए फेज ते तमरा 0 to 2 इयर्स हेई थाए थ्रू सेंस एंड मूवमेंट्स 2 to 7 इयर्स एज जोटा रही छि प्री ऑपरेशनल स्टेज mastered in the ability of mental operation किसी छोट छोट एडिशन एगुडा को सब से करि परथा है 7 to 11 years is the phase of discovery learning किसी खोजी की किसी पाठ पढ़िबा बा किसी जिंस पाइबा सेटा से इंटरेस्ट देखैता है आ 11 years पर abstract thinking hypothesis testing हां डिडक्शन एबिलिटीज एगुडी को सब प्रॉब्लम सॉल्विंग हां तो कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव ऑपरेशंस बा क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग एगुडी को सब धीरे धीरे आहुरी बढ़ी थाए तो ये विषय पढ़िबो से गुडी को देखिकिना आमे जे जोटा रही सोशल प्रोसेस गुडी को मध्य ऑर्गेनाइज करिथाए सो सेइथरे मध्य गोटे रही तुमर पियाजेंट कर जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट केमती बहुत अधिक आमे जति पिलार एबिलिटी था ताटू से अधिक किभଳି से लेवल को जाई परिबो ना फैसिलिटेटर बा टीचर्स ताको सेइथरे हेल्प करथांती गोटे सोसाइटी जतरे से मिसी थाए जोटा कॉम्प्लेक्स कांसेप्ट सेटा को से बुझी पारि थाए डिस्कशन थ्रू रे बा एनालिसिस थ्रू रे समस्त सहित मिसिबा द्वारा ही सेटा तार गोटे प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ताकर जोटा सबटू अधिक ताकर डेवलपमेंट हेई थाए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज से गुडी को मध्ये डेवलपमेंट हेई थाए तो एथरे प्री स्कूल एलिमेंटरी स्टेज स्कूल सेकेंडरी स्कूल ए विषय सब किछि डिस्कशन करा है छी then teaching at tertiary level means the higher education stage and it is a stage after completion of schooling students they enter into the tertiary level of teaching and tertiary level of education that is the higher education okay so they have to reflect what they are thinking so thinking about the thinking metacognition understanding what they are understanding this type of higher complex kind of thinking or logical thinking it is also developed से समय पिलांकर से भलिया सोशल सोसाइटी से भलिया हेते से माने किछि अधिक जिंस डिस्कशन करि थांती ता सहित कोलैबोरेशन एडजस्टमेंट एगुडा को मते बहुत मात्रा रे ताकर डेवलपमेंट हेई थाए different teacher education programs are also organized to help our higher education teachers आ गोटे कॉन्सेप्ट मत देछि ओपन डिस्टेंस लर्निंग थ्रू डिस्टेंस लर्निंग आल्सो वी आर इम्प्लीमेंटिंग एजुकेशन correspondence course open schooling or a policy like any NPE planning commission in 1986 they have also given importance for correspondence course जोटा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग रही इग्नू रही
they are providing open and distance learning system or provisions for our students. Okay, so you are also having such type of experience of open and distance learning, where you don't need to go to any formal educational institution, you don't need to attend it regularly, and you can learn or your master degree or any degree by residing at your own place. You don't need to attend regularly to regular class here. Okay, so through some types of personal contact program or counseling program, we are discussing some issues and you are asking your doubts, your queries, and also we are interacting with each other. We are asking some questions to you, and in that way, we are learning. Otherwise, you are provided with different types of learning materials. Learning materials are there in your doorstep. You are getting it easily from the center, New Delhi. ସେଇଠି ତମେ ଇଜିଲି ପାଇଯାଉଛ ଏବଂ ତାକୁ ରେଗୁଲାରଲି ପଢୁଛ, ଯାହା ବି ତମର ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି କାଉନସିଲିଂ ତମେ ସେଟା ଡିସ୍କସନ କରୁଛ ବା ପଚାରି ପାରୁଛ ବା ତମେ ସେଟା ପଢି ପାରୁଛ। କୌଣସି ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ ତୁମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, କେବଳ କାଉନସିଲିଂ କ୍ଲାସ କିଛି ତୁମକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ 10 ବିଷୟରେ ୟୁନିଟ୍ 10 ରେ ଦେଇଛି। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ତମର ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି, that is about your unit 11, unit 11 is also there. That is the last unit of this block. 3. Community participation in education. ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। So already we have found relationship between teacher, parents, student and community. So in this issue there is also a one unit is also it is there, that is unit 11, community participation in education. So whenever we are teaching in we are working as a teacher, we are serving for the society, we are playing the role of a social transformer or social change agent. We are considered as a change agent in the society. Just like that, community is also helping our education system. Community is also participating in different educational activities. आमे तो जाइकिना टीचर्स माने कम्युनिटी को बा सोसाइटी को चेंज करूचे, सेही भलिया कम्युनिटी रो किछिटा मात्रा रे इफ इंपोर्टेंस रहूची एजुकेशनल एक्टिविटीज रे बा एजुकेशन को आहुरी रिसोर्सफुल करिवारे, से विषय रे एई पर्टिकुलर यूनिटटा रहिची। So let us discuss about it. So in this particular unit, we are going to understand community participation, community structure and problems and issues related to it. So you know that nowadays in our school system, we are having village education committee, and as per the 73rd and 74th constitutional amendment, that panchayati raj bodies of management will be there, जोटा कि ग्रासरूट लेवल रा पार्टिसिपेशन रहिबो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रहिबो। स्कूलिंग रे स्कूल गुडा करे आगुरु एसएमसी एसएमडीसी रहु नथिला, किंतु 73rd 74th अमेंडमेंट जेतले आसी गला ता परे सेही भलिया किछि कमिटीज गुडा को रहिला, फंक्शनल हला, एवं सेहीठी किछिटा रिप्रेजेंटेटिव रहिले कम्युनिटी रो, जेमति एससी एसटी ओबीसी वुमेन आउ माइनॉरिटीज सेही पेरेंट्स एई सबु माने रहिले, जो माने कि कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करूछन्ती स्कूल रे, आउ सेही माने मध्य स्कूल एजुकेशन रे एक्टिव पार्टिसिपेशन
नौछंती बा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को मध्य इन्फ्लुएंस करि पारुछंती सो केवल आमे देखिबा जे गोटे जणे प्रिंसिपल जणे हेडमास्टर स्कूल को अथॉरिटी रहिबे नाही तांको सहित मध्य गोटे शेयरिंग पार्टिसिपेशन आमे पाउची अलगा माने मध्य पार्टिसिपेशन करूछंती एडमिनिस्ट्रेशन रे डिसीजन मेकिंग रे आउ ता सहित मध्य एकेडमिक एनवायरनमेंट को मध्य से माने पॉजिटिवली चेंज करि पारछंती सो कम्युनिटी has been used in various way by the different expert they use community kon community mane kon buchho it's a group of people occupying a geographical area गोटे geographical area रे गोटे एरिया रे लोकालिटी रे किछि पीपल बा किछि लोक रहउछंती गोटे ग्रुप ताको गोटे कम्युनिटी बोली कोहा जाउची एवं सेही कम्युनिटी पाखरे हमरो स्कूल रहउची आउ स्कूल को मध्य से माने आमे मे बी इट्स ए विलेज और ए टाउन और सिटी व्हाटएवर इट बी बट इट इज आल्सो इन्फ्लुएंसिंग द एजुकेशनल एक्टिविटीज से विषय रे मध्य कम्युनिटी विषय रे विभिन्न प्रकार सोशियोलॉजिस्ट मानकर थॉट्स कोन से विषय रे देइची कम्युनिटी रो कैरेक्टरिस्टिक्स गुडी को विषय रे आलोचना कराइची so community considered as a little distinctive harmonious homogeneous and self sufficient in comparison to other group केवल खाली लोक रही गले हबो नै इट्स अ डिस्टिंक्ट it is specialized harmonious homogeneous and self sufficient मोली तार कैरेक्टरिस्टिक गुडी को रहिछि से विषय रे आलोचना कराइछि the use of term community for homogeneous ओगला किछि समान प्रकार लोक सेठी रहुछंती so community participation in education it is also very important so why should we participate as a community member in the school so jodre participation requires some type of voluntary and democratic involvement of people in contribution to development of efforts sharing equitability in the benefits derived from and decision making respecting to setting goals jota mu kohutili empowerment and adjustment between individual and group behavior so people or group जो माने कि सेमाने किछि इक्विटी मेंटेन करिवे समस्त को समान अधिकार देवा डिसीजन नेबारे एडमिनिस्ट्रेशन रे समस्तकर किछि व्यू पॉइंट्स रहइबो किछि फीडबैक्स रहइबो ए सब जिंस केमिति आमे कम्युनिटी मेंबर्स को मध्य इक्वाली आमे इन्वॉल्व करि परिबा एजुकेशन रे सेति पई आमे ताकू मध्य विभिन्न प्रकार एफर्ट्स केमति हमर सक्सेसफुल हेई परिबो स्कूल से रिलेटेड किछि एक्टिविटीज पई इन्वॉल्व करिथौ सो पार्टिसिपेशन कैन बी तब जदि किछि कैरेक्टरिस्टिक रहिछि केमिति पार्टिसिपेशन करा जाई परिबो ताले आमे कहि परिबा पार्टिसिपेशन कैन बी ऑफ बोथ पैसिव और एक्टिव टाइप सो एक्टिवली से माने कम्युनिटी मेंबर पाठ पढै न पारंती बा किछि काम रे एक्टिवली पार्टिसिपेट करि परिबे केमति की एग्जांपल देई परिबो की पैसिव एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स मैम सब्जेक्ट अनुसार ठीक भाव माने सब सब्जेक्ट पे टीचर अवेलेबल अछंती कि नहीं आउ स्कूल रे किभली माने जो मिड डे मील ता ठीक भाव दिया जाउछ कि नहीं यस एक्टिवली से माने कोनसी डिसीजन निया होची कोनसी मीटिंग रे से माने तांकर भाव को एक्सप्रेस करि परिबे किबा इनडायरेक्टली मध्ये किछ इंफॉर्मेशन देई परिबे सो सेही पैसिव और एक्टिव रोल दे कैन प्ले पार्टिसिपेशन कैन बी लेजिस्लेटेड एंड सेल्फ मोबिलाइज जोटा की रहिछि 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे से माने रिकमेंडेशन करछन जे लोकल बॉडीज आउ तांकर इन्वॉल्वमेंट रहिबो निश्चित भाव रे स्कूल रो फंक्शनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन रे किछि पार्ट से माने मध्य किछि रिस्पांसिबिलिटीज नेबे सो सेइथरे मध्य से माने सेल्फ मोबिलाइज्ड बा निज इच्छा रे मध्य से माने आसी परिबे बा तांको मध्य इनवाइट करा जाई परिबो देन पार्टिसिपेशन बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन और मटेरियल कंट्रीब्यूशन किछि इंफॉर्मेशन लाइक रिसर्च वर्क और किछि लोकल इंफॉर्मेशन बा लोकल सोसाइटी रो किछि रिचुअल विषय रे नॉन विषय रे मध्ये से माने जणाई परिबे मटेरियल्स मध्ये देई परिबे एई भलिया मध्ये हेई परिबो तापरे मध्ये कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन इन एजुकेशन ए विषय रे किछि देइछि कांसेप्ट जेंति कि पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन
सेई 73rd 74th अमेंडमेंट विषय डिस्कशन करा जायछि जोतरे कि वुमेन SC ST representatives of community, they will also participate in educational decision and administration. So ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ସେ କମ୍ୟୁନିଟି ରେ SMC SMDC ମେମ୍ବର ହେଇକିନା ରହିବେ ତା ରୁଲ ଅଛି ସମସ୍ତେ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସି ପାରିବେନି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ କରା ହେଇକି ରଖା ହବ କୋଉମାନେ ସେଇ ବୋର୍ଡ ରେ ରହିବେ से विषय जोटा नेशनल पॉलिसी एजुकेशन ऑन एजुकेशन 1986 आउ प्रोग्राम ऑफ एक्शन रिवाइज्ड इन 1992 से माने मध्य कहचंती जे डिसेंट्रलाइजिंग प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन डिसेंट्रलाइज्ड जोटा गोटे पावर गोटे जगह सेंट्रलाइज्ड हेकी रहउतला सेही भलिया न हेकी समस्त डेमोक्रेटिक वे रे सेइथरे पार्टिसिपेट करिवे एवं समस्त सेइथरे मिसिकिना डिसीजन नेबे कोन ठीक कोन भूल समस्त गोटे डेमोक्रेटिक मैनर रे डिस्कशन करिवे त विलेज एजुकेशन कमिटी रहिला हां से भलिया किछि कमिटी स्कूल रे परिचालित होउची देन रिलेशनशिप बिटवीन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर सो पंचायत मेंबर्स माने VC रे रिप्रेजेंटेशन देई परिबे roles and function performed by the panchayat members in primary education, statutory provisions and actualization, networking on panchayat and other government non-government bodies, so that coordination will be there. Panchayati Raj institution और community structure से विषय community structure in education को भले रहइबो जेंति school management committee, mother teacher association, village education committee, parent teacher association, mother association and women motivator group, एई भलिया सब किछि ग्रुप रहिले जो माने काम करिवे स्कूल रे आ रिप्रेजेंट करिवे कम्युनिटी को से विषय मध्ये डिस्कशन कराई जे पढिबो विलेज एजुकेशन कमिटी कौन आउ पेरेंट टीचर एसोसिएशन कौन कहीं सेटा रही थाए से विषय मध्ये बही डिस्कशन कराई जेमती कि विलेज कम्युनिटी रो पार्टिसिपेशन निश्चित रहिवा कथा गाँ रे कौन सुविधा असुविधा रहउची सेमानकर एक्सपेक्टेशन कौन रहिची तांको पिलांकर प्रॉब्लम्स कौन रहिची ताकू मध्ये सेमाने टीचर्स को सहित बा अथॉरिटी सहित डिस्कशन करि परिबे सो फाइनेंशियल किछि यदि बजेट आसला त सेमाने मध्ये डिसाइड करि परिबे कोन आमे करिबा सेते डिसीजन नै परिबे एबळे सब प्रोविजन रहिची ensuring enrollment of all children, monitoring school activities and retention कोडी स्कूल टीचर्स आछंती न आछंती स्कूल कोन प्रॉब्लम रहिची कोडी अटेंडेंस लो रहउची ए सब विषय से माने मध्ये अवेयर होचंती आउ सेठी मध्ये से माने तार प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा जिवो सेते सजेशन देई पारछंती पे सोशल स्पेशल अटेंशन टू द एजुकेशन नीड्स ऑफ गर्ल्स and disadvantaged group to improve the facilities in the school, compound wall, new classroom, toilet facilities, repair, maintenance से community रो ही लोक आसिकिना एई सब काम गुडी को करै पारुछंती से भलिया facilities गुडी को मध्य से माने देई पारुछंती सब जिनस रे आमे स्कूल अथॉरिटीज जेते काम करिवे टीचर्स करबे से माने मते डिपेंडेंट रहउचंती कहा ऊपर एई भलिया सोशल सोसाइटी ऊपर बा से भलिया मेन पावर ऊपर तो से माने मते केही थिबे जदी तांकर पेरेंट्स बा किछि पर्सन से माने रिपेयरिंग रे हेल्प करछंती किछि कंपाउंड वॉल तयारी हला गार्डन हला डोनेट कर दउचंती किछि जमी दे दउचंती रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल एनवायरनमेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी विथ द स्कूल ए सबु आस्पेक्ट कम्युनिटी रिसोर्स किछि अछि जोटि कि पिला जाय कि किछि सिखि परिबे कम्युनिटी रिसोर्स जेंति मेडिकल हला पोस्ट ऑफिस हला फायर स्टेशन हला सेटा मध्ये गोटे कम्युनिटी रो पार्ट लाइब्रेरी हला सेठी मध्ये पिला जाय कि पढी परिबे बा किछि जिंस सिखि परिबे तो तार कोन फैसिलिटीज रही ताकू मध्ये गोटे गोटे कोऑर्डिनेशन रहिया कथा कम्युनिटी आउ स्कूल भितरे तो से माने जो बीसी रहिला पेरेंट टीचर एसोसिएशन रहिला से माने एथे सब कोऑर्डिनेशन करि थांती so that our school system will be more resourceful and students will get more provisions to learn. So how are they helping our teachers? Kemti help korchonti assisting the teachers in conducting school activities, helping the teachers in conducting door to door survey work. The survey work को जाउछंती से माने community members माने ताको help korchonti कोन सर्वे कराउची कोन सो सर्वे कराउची स्कूल गुडा करे की कहबो कौन सो सर्वे करा होची जनगणना कार्यक्रम होची बा गर्ल्स चिल्ड्रन को एनरोलमेंट केते हला से विषय डिस्कशन करा होची हां
कि चाइल्ड लेबर केते रहिला एडल्ट एजुकेशन एडल्ट लर्नर किए सब पढ़िया ପାଇଁ ଚାହୁଛନ୍ତି ବା ନ ପଢିଛନ୍ତି लिटरेसी ए सब विषय किछि ताकर स्टैटिस्टिक्स दरकार होछि बा हिसाब से माने करि पारछନ୍ତି assisting teachers in pursuing parent of unenrolled children for sending them to school किछि जो माने पेरेंट्स रहिछन स्कूल पठिया को चाहुनांती गर्ल चिल्ड्रन हो बा तांको पिला मान को पढ़िया को चाहुनांती तो से माने निजे कम्युनिटी रो पार्ट रो जे कम्युनिटी रो पीपल माने ही से मान को सिखेबे नाही आम पिला को आमे पढौछु तुमे माने मते तुम स्कूल को तुम पिला को छाड़ो providing feedback to the teachers about educational progress of their children कौन हैला कि भली पाठ पढुचंती पिला पाठ पढार कौन असुविधा होउची हां एई सब विषय रे से माने मध्य पिलांकु पिलांकर पाठ पढ़ा संबंधी जहाँ भी प्रोब्लेम रोची सेतिरे से माने फीडबैक देई पारछंती हम पिला पढुची कि नाही कौन तार असुविधा रोची फैमिली प्रॉब्लम्स कौन रोची काहे कि पढ़ी पारु नाहंती हां कोठी असुविधा ए सब विषय रे से माने किछि गाइडेंस मध्य नै थांती आउ से माने टीचर्स को मध्य फीडबैक देई थांती जोटा कि टीचर्स माने मध्य जानिबा कथा जे आम पिला आमे तो इंस्ट्रक्शन दउची किंतु सेडा केते फ्रूटफुल हला हां सेडा मध्य से माने जानिबा कथा ए सब विषय मध्य एठी देइची कम्युनिटी रो कार्य गुडी देन कमिंग टू problems and issues in this relationship of school and community जे कोन हमरो problems रहिची जेमति कि community mobilization community participation community empowerment हां so problems और issues different types रहिची जेमति कम्युनिटी मोबिलाइजेशन केमती लोक आसीबे केमती से माने मीटिंग रे गोटे सुपरफिशियली एक्ट न करी कि समस्ते सोसाइटी रो केमती इंप्रूवमेंट हो ता ऊपर केमिति काम करिबा के कहिबो टीचर अच्छो कोन सब प्रॉब्लम एई जो एसएमसी एसएमडीसी हेला परे कोन सब प्रॉब्लम होची बा कोन चैलेंजेस अछि के शेयर करिया को चाहिबो कौन कहले मैम ए जो कम्युनिटी रा जो पार्टिसिपेट करूछंती एसएमसी वीसी विलेज एजुकेशन कमिटी पेरेंट टीचर एसोसिएशन से माने जेतले काम करूछंती कोन सब प्रॉब्लम्स आ चैलेंजेस आसुची स्कूल पई बा कम्युनिटी पई मैम से माने आसे द्वारा माने यूजुअल माने पेरेंट्स मान को भीतर कम्युनिटी बचा जाए ना प्राय तो माने गार्डियन मीटिंग हेले तापर से मान थ्रू माने बचा जाए कमिटी से मान को बचा द्वारा केते उडे भलो हुए आ केते उडे अदरवाइज से मान को इंडिविजुअल बा पर्सनल ने कि किछि माने इशू भी देखा दिए पर्सनली से माने तांको पिला को इंडिकेट करथांती आ किंतु सोशलाइज माने टोटल सब ठीक नै कि जो कम्युनिटी देखे स्कूल डेभलप हम पिला कौन माने उत्साहित लगे कौन टे करा जीवो आउ पिला कौन स्कूल ठकुची माने नथियो बट तांको ये पैसा आनिकी से मानक भितर शेयर करथांती एटा किंतु कम्युनिटी थिबा द्वारा हे पारेनी से माने माने सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर टीचर से माने गवर्नमेंट को माने परमिशन मागंते एवं तांकटू सब्जेक्ट वाइज टीचर ये करथांती तो पॉलिटिक्स भी हेई थाए विभिन्न प्रकार डोमिनेंसी मध्य रही थाए टीचर्स मान को सहित ने बुझी पाइ न था जे केमिति आमे कम्युनिटी रो हेल्प देबू प्रकृत रे हेल्प मते देई न थांती बहुत बडे प्रॉब्लम सब हेई थाए तो कम्युनिटी मोबिलाइज केमिति करा जीवो कम्युनिटी रो पार्टिसिपेशन केमिति बढ़िबो किछि लोक पार्टिसिपेट करिया को मते चाहि न थांती हां केवल लोक देखाणिया हाँ किसी जनकर थाए किंतु केही आसिया को चाहि न थांती एई भलिया मीटिंग को सेटा मते गोटे पार्टिसिपेट ही करि न थांती बा हेल्प करि न थांती आउ कम्युनिटी एम्पावरमेंट से माने निजे ना पार्टिसिपेट करंती ना स्कूल रो किछि एक्टिविटीज को मध्य करिबा को सहाय्य मध्य करि न थांती सो एई भलिया किछिटा फील्ड लेवल रे प्रॉब्लम्स आउ चैलेंजेस हमर आस्ते where teachers have to work tactfully as well as teachers has to also face all these challenges with proper strategy तांको करिया को पड़ता है सो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन केमिति आमे कम्युनिटी को अट्रैक्ट करिबा केमिति तांको कहिबा विभिन्न प्रकार आम स्कूल सहित इन्वॉल्व हुआ कम्युनिटी को केमिति मोबिलाइज करिबा
different types of programs we can organize like nukkad natak, kala jatra, bal mela, एगुड़िक स्कूल तरफ आम पथ प्रांतर नाटक जो कहीपर रेडियो टीवी प्रोग्राम ऑडियो वीडियो कैसेट प्रिंटिंग न्यूज पेपर पैम्पलेट बा पिलांकर गोटे सकाळू गोटे प्रभात फेरी ए भलिया किछि प्रोग्राम आमे माइक्रो लेवल रे करि परिबा जोटि कि आमे अट्रैक्ट करि परिबा कम्युनिटी पर्सन मान को जे से माने मते स्कूल एक्टिविटीज रे इन्वॉल्व हुंतु बा कोनसी प्रकार सोशल सर्विस बा एक्टिविटीज रे इन्वॉल्व हुंतु सो दैट वी कैन गेट some resources from our community किछिटा मात्रा रे हमकु मध्य कार्य करिया को पड़ी थाए then community participation and empowerment community जमते जते अधिक पार्टिसिपेट करिवो सेति कि आमे एम्पावरमेंट आनी परिबा केमिति आनी परिबा ना जदि आमे गोटे देखो गोटे एग्जांपल दबा जदि आमे गोटे कहूचे गर्ल एजुकेशन ऊपर करूची पिला को आमे समस्त को रिक्वेस्ट करबा जे तुम पिला मान को जियो मान को तुमे पाठ पढ़ा रे इन्वॉल्व करो तांको मध्य घर काम न देई किना बा ताकर चाइल्ड रियरिंग छोटो पिला भाई बणी मानकर काम रे न करी कि घर काम न करी तुमे स्कूल को पाठ पढ़ाओ किंतु किछि पार्टिसिपेशन से माने करि नथांदी जत्ते से माने पार्टिसिपेशन न करिवे सेति कि आम सोसाइटी डिग्रेडेशन हे जीवो काहे कि ना एजुकेशन ही तांकर मिनिमम लेवल रे एजुकेशन रहला नै गर्ल एजुकेशन जदि हमें कहिबा ना से माने पाठ पढ़िबा सिखेले ना कोनसी वोकेशनल ट्रेनिंग नेले ना हेल्थ हाइजेनिक रिलेटेड किछि इश्यूज ऊपर से मानकर किछि ट्रेनिंग रहिला दे वुड बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स फाइनेंशियली एंड सही भलिया प्रॉब्लम्स गुडी को मध्य से माने जते जते इंडिपेंडेंट हेबे नै बा डिपेंडेंट हे कि रहिबे घरे सेति के तांकर प्रॉब्लम्स गुडी को मध्य बड़ी बड़ी जीवो सो we if we want to empower our community or society we have to also provide education to our people education to our girls से विषय हमकु तांकु बुझेबा को पड़िबो जति कि समाने पार्टिसिपेट करिवे एजुकेशन रे सेति कि समाने एजुकेशन रे पार्टिसिपेट कला परे डिफरेंट ट्रेनिंग नेला पर समाने सेति कि पावरफुल हेई परिबे तो एई जिंस मध्य रहि जे रिलेशनशिप देन डिसेंट्रलाइजेशन एंड को काला जाट एंड नुक्ड नाटक तो कोन हाँ कला यात्रा यात्रा गुडी को पथ प्रांतर नाटक यात्रा करी कि ना से विषय रे किए केबे पार्टिसिपेट करछ कि नुक्कड़ नाटक रे पथ प्रांतर यात्रा किए करिछ किबा देखिछ कि पार्टिसिपेट करिछ कि किछि प्रोग्राम रे से भलिया जौतुक प्रथा ऊपर हैला हां के देखिछ कि एचआईवी एड्स ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम कोडी देखिछ आज्ञा मैम देखिछ कि कोठी हम गोटरे देखिछि स्कूल सब रोड सेफ्टी ऊपर सब जो स्कूल ले पिला मन सब करंती एक्शन मन एक्शन जोटा एकक अभिनय सेमती सब हम देखिछु रोड एक्सीडेंट की अलग सब जो नहीं की मैम मैम हमर स्कूल वायर से हम सेटा इक्वल कि माने गाँ को सफा रखिया पाई माने ताकू गीत आकार रे विभिन्न प्रकार कह कि माने हम स्कूल पिला माने गाँ रे बुली बुली गोटे गोटे जगह रे प्रोग्राम करथिले सो सोशल सर्विस जोटा कि आमे गाँ रे हो बा कोनोसी मलेरिया ऊपर हो किबा कोनोसी जौतुक प्रथा हला निशा निवारण हला एई सब ऊपर आमे किछि किछि नुक्कड़ नाटक करि थाउ जोटा कि आमे समस्त को अवेयर करि थाउ जे एई भले आमे करिबा नाही एई भलिया करिवा द्वारा विभिन्न गोटे कहानी को नै करी पिला माने एक्ट करि थांती जोटी लोक समागम हेइ किना समस्त देखि थांती केमती होउची एटा सेटा मध्ये आमे ऑर्गेनाइज करि परिबा के देखिया को चाहिबा कि एबे द टाइम हेची आरो हम गोटे शेयर करिया को चेष्टा करूची जदि हेइ परिबो नुक्कड़ नाटक केमती आमे करि थाए स्कूल लेवल रे जदि तुम माने एजुकेशनिस्ट हबो सेटा मध्ये तुमे देखि परियो मु शेयर करिया को चेष्टा करछु गोटे नुक्कड़ नाटक आमे देखिबा
देखो गोटे नुक्कड़ नाटक चलो आम देखा जो थे कि तुम मैंने देखिपर साउंडटा कर दो मैम साउंड पर सुनिए साउंड होनी ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହଉନି। अच्छा ठीक अच्छे ठीक अच्छे हाँ यार कौन गोटे बोधे प्रोब्लेम अच्छे देखिए तो ये भाया ही हम तुम निजे देखीदब यहाँ समस्त पाखे तो अच्छी ठीक अच्छे तुम मैंने देखीदब से केमती नुक्कड़ नाटक कराऊँगी स्कूल गुड़िक कॉलेज गुड़िक रोड सेफ्टी उपरे करिथाए बा विभिन्न प्रकार जो इमर्जिंग इश्यूज गुड़ाक रही ता उपरे करिथाए सो एटा मध्य बहुत इम्पोर्टेंट हो गलानी सबू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे को करिकुलर एक्टिविटी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिते आम करुचे प्रथमे आम देखुचे आम से भाया एक्सपीरियंस पिला दौचे कि नहीं एवं कौन सबू से भाया प्रोग्राम आम करवा जो थे कि आम पिला माने कम्युनिटी सहित डायरेक्टली इनवॉल्व हेबे जिते आम ऑर्गेनाइज करिथाउ किछि पिला टोटल आम बीएड कॉलेज रो स्टाफ मैंने जो कर पिला माने टिके प्रथमे करिया पई चाहि न थांती आमे केमिति एमती सब लोक जनगहली एरिया थिबे सेठी जाई कि आमे केमिति परफॉर्म करिवु आउ डायलॉग केमिति कहिवु हमकु तो डर लागिवो समस्त ठिया है कि देखिबे रास्ता रे आमे हठात एमती केबे करिनाउ किंतु सेठी हमकु बुझिया को पड़िबो जे एटा सेही सोशल सोसाइटी रो इम्प्रूवमेंट पई हमकु करिया को पड़िबो एई भलिया एक्टिविटीज एक्ट गुडे को करिया को पड़िबो डायलॉग गुडी को हमकु ताको बारंबार प्रैक्टिस करिया को पड़िबो आउ सेइथरे कोन हबो पथप्रांतर नृत्य पथप्रांतर रो ड्रामा एई भलिया ऑर्गेनाइज करिया द्वारा सेमान को भितरे मध्ये गोटे गोटे आसीबो जे हां गोटे जिल आसीबो बा गोटे स्किल डेवलपमेंट हबो नाइ आमे केवल प्रोफेशनली आमे बा जेबे भी गोटे भलो मनीष आमे होउची गोटे बड़ जेतले हेई जाउछु सेतेले आमे मध्ये सोसाइटी पई किछि हमर कमिटमेंट रहिछि सोसाइटी रो केमति इंप्रूवमेंट करिबा सेई भलिया किछि कार्यक्रम मध्ये आमे ऑर्गेनाइज करिबा एई भलिया तांका भितरे गोटे फीलिंग्स आसीबो तो सेई भलिया एक्सपीरियंस आमे स्कूल रे ऑर्गेनाइज करि परिबा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे ऑर्गेनाइज करि परिबा सो दैट देयर विल बी स्ट्रांग रिलेशनशिप बिटवीन द चाइल्ड एंड द सोसाइटी आ सोसाइटी पई मते कोन करिवार अछि ता विषय रे मते तार किछि आईडिया रहिबो तो एटा देइछि तमे पढिबो बही रे डिसेंट्रलाइजेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जोटा हमें कहूले विलेज एजुकेशन कमिटी आउ रही पेरेंट टीचर एसोसिएशन एई माने सब रही दे आर आल्सो हेल्पिंग अस टू व्हाट एनजीओस दे आर आल्सो दे आर हेल्पिंग फॉर क्रिएटिंग decentralized administration where all are having certain kind of abilities to take decision in different educational activities directly they are getting opportunities so ए विषय देइछि पढिबो अच्छा तुम असाइनमेंट तो जानी थी वो समस्ते 31 मार्च सुधा हमको असाइनमेंट जमा करिवार अछि असाइनमेंट समस्ते लिखिलानी फर्स्ट ईयर रो
Yes, ma'am. ମ୍ୟାମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାନି 9th ର Yes, ବୋଧେ ma'am. submit କଲେ ହବ କି? ମ୍ୟାମ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ସବମିଟ କରାହବ, ଯୋଉ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ନା ଏଇ ଯୋଉ ଇଗ୍ନୋ ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟରଟି? ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରେ ହିଁ ଜମା କରିବା କଥା। ଯଦି ଯାହାର ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର କଲେଜ ଅଛି, ଯୋଉ କଲେଜ ସେଇଠି ହିଁ ସେମାନେ ଜମା କରିବେ। ଯଦି ନଳିନୀ ଦେବୀରେ ଅଛି ତ ନଳିନୀ ଦେବୀରେ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରେ ନଳିନୀ ଦେବୀରେ କରିବେ। ଯଦି ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟର ତୁମର ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ହେଇଥାଏ ତେବେ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରଟା ତମେ ଦେଖିବ ତମ ଆଇ କାର୍ଡରେ କୋଉଠି ଅଛି ତମର କୋଉଟା ସମୟ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମେ ସବମିଟ କରିବ। ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। सो एमईएस 14 रे तीनटा क्वेश्चन तमर दिया ହେଇଛି। each question you have to attend with 500 words। ସବୁତକ ପିଲାମାନେ ତିନିଟାକ ହିଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ ହେଲା, ସବୁତକ କମ୍ପଲସରୀ। ଆଉ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ଟାଇପ ଆଉ 500 ୱାର୍ଡରେ ତମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଓକେ, ସୋ ଏଇଥିରେ First question ଦେଇଛି explain the meaning and characteristics of socialization, analyze the process of socialization in the light of Freud's psychoanalytical theory of socialization। Second question ହେଲା discuss the strength and limitations of mass media as a means of education at different level of education, explain its uses in distance education system। এটা ବହୁତ ଇଜି, ତମାନେ ସବୁ ଲେଭେଲ ବିଷୟରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗଲା हायर एजुकेशन पर्यंत ताको टिके टिके डिस्कशन करिकिना डिस्टेंस एजुकेशन तो तमे निजे लर्नर जानि परथुव से विषय लिखिबो। Why is equity important in Indian education system? Discuss different strategies adopted in achieving equity in Indian education system with suitable illustration। equity काहे की important education system रे? Discuss different strategies adopted in achieving equity in Indian education system। केमिति आमे इक्विटी आनि परिबा ता विषय इलस्ट्रेशन दिया। एटा तमरो सब क्वेश्चंस रहिछि। समस्त असाइनमेंट पाइछ, क्वेश्चन लेखिबा स्टार्ट कलणी? आज्ञा मैम। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ। तो एटा 31 तारीख सुधा तुमको सबमिट करे अछि। बेले बेले हमर डेट मध्ये एक्सटेंशन हेई थाए, एप्रिल पर्यंत जाई थाए। आउ सेटा सेई एप्रिल भितरे जते डेरी करबो सेते डेरी रे तमरो ग्रेड अपडेट हबो। तेणु ठीक टाइम रे चेष्टा करियो लेखिया पैका। तमर मान को स्टडी सेंटर प्राय तो कोठी नयन देवी अछि, बीजेबी अछि बोधे? आज्ञा मैडम। ମ୍ୟାମ୍ ଆମର ମ୍ୟାମ୍ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରଟା ରେଭେନ୍ସା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ସେଟା ଆରଏନଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍। ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ ସବମିଟ କୋଉଠି କରିବୁ? आरएनटी रे ही करिया पड़ियो स्टडी सेंटर। टिके पचारि दबो जोटी भी तांकर सेक्शन थिबो सेठी से पचारि दबो सार एठी असाइनमेंट ता दिया हबो कि पचारि कि ना तमे दबो। ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ ଦୂରରୁ ଯିବୁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ରେଭେନ୍ସା ଅନୁଯାୟୀ ଆରଏନଟି ସବମିଟ କରୁ, ତାଙ୍କେ ନାଇଁ କରିବେ ଯଦି ତାହେଲେ ରେଭେନ୍ସା ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା? हां सेमती तांकर जदि चेंज कर दैचंती रेवेन्सा आउट टोटल नाही स्टडी सेंटर। ଜିମେଲ କୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲା ଚେଞ୍ଜ ମତେ କହୁଛି ଲେଖିକି ଆସିଥିଲା ସାର୍। ताले तमे जोटी तम ना अछि सेठी ही दबो, कारण एठी एमती हेई थाए जोस्टी स्टडी सेंटर थाए सेठी का टीचर्स माने ही इवैल्यूएशन करि थांती। आउ सेही स्टडी सेंटर रो रिस्पांसिबिलिटी थाए जे समाने रीजनल सेंटर को मार्क गुडी को पठेइबे। तांकू अलर्ट करा हे जाई थाए, माने धरो ଯୋଉ ରେଭେନ୍ସା ମ୍ୟାମ୍ ରେଭେନ୍ସାଟା କଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଜାଣିପାରିଲି? से कहउजନ୍ତି तांकर स्टडी सेंटर ता थिला रेवेन्सा, एबे आरएनआईसी को चेंज हे जाईची। गोटे आउ गोटे कॉलेज अछि टीचर एजुकेशन बीएड कॉलेज ता जो। ମ୍ୟାମ୍ ମୋର ବି ଥିଲା ରେଭେନ୍ସା କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ମ୍ୟାମ୍ ଜିମେଲ ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ମ୍ୟାମ୍ ଜିମେଲ ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ବୋଲି। ମେଲ ରେ ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ହଁ ମେଲ ମ୍ୟାମ୍। କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। हाँ ताहले तमे चेंज जदि करिछ रूल हिला देखो हमर एमिति हेइताय ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ आमे ଚେଞ୍ଜ जहाँ भी କରୁନୁ। ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରୁନୁ ना ରେଭେନ୍ସା ना सिमारे
ସେମାନଙ୍କ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଡିସିଜନ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଯେ ସେମାନେ ରେଭେନ୍ସାରେ କରିବେନି ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ସେମାନେ ଆରଏନଏସସି ଯୋଉ କଟକ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ବିଏଡ୍ କଲେଜ ଏମଏଡ୍ କଲେଜ ସେଇଠି କରିବା ବୋଲିକି ସେମାନେ ଭାବିଥିବେ। ତ ସେଇଠି ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ସେଇଠିକା ଟିଚର୍ସ ବା ମାନେ ହିଁ ଇଭାଲୁଏସନ କରିକି ମାର୍କଟା ସେଇଠି ହିଁ ପଠେଇଥାନ୍ତି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ମାନେ ତମ ନାଁ ତମର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଯାଏ ତାଙ୍କର ସର୍ଭରକୁ ପଳେଇଯାଏ ବା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯାଏ ଯେ ତମର ସବୁ ତକ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରଠୁ ଗଲା ତମର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯାହା ବି ଡାଟା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା ଆଉ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରର ଡ୍ୟୁଟି ଥାଏ କି ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯଦି ସେମାନେ ଖାତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଖାତା ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ତାର ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିକି ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠେଇବେ ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନେ ତମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ନା ଏଇଠିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆରଏନଏସସି ର ହିଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିବ ସିଏ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ପିଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ପିଲାର ଯାହା ବି ମାର୍କ ଅଛି ସେମାନେ ଅପଡେଟ୍ କରିକି ଆରସି କୁ ଦେବେ। मैम थीसिस सबमिट रो लास्ट डेट सेमती किछि अछि कि देख थीसिस जो रही एमईएसपी पेपर ସେଇଟାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ତ ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ତମେ ସବମିଟ୍ କର ମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଦବା ପାଇଁ କୋଉ ମାସରେ ତମେ ଏକ୍ଜାମ ଦିଟା ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ହେଲା ତମର ଜୁନ ଜୁଲାଇ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ହବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭାଇବା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଭଳିଆ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଡିସେମ୍ବର ଏଣ୍ଡ ଟର୍ମ ପରେ ଗୋଟେ ଭାଇବା କରିକି ତମକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଡ ସେମାନେ ଆଲର୍ଟ କରିବେ ଯଦି ଜଣେ ଡିସେମ୍ବର ରେ एग्जाम देला ताहले से थीसिस केबे सबमिट करबो थीसिसटा ता पूर्वरु ଦେଇଥିବ ସେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବର ଯୋଉଟା ତମର ରହିଛି ଯେମିତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 କିମ୍ବା ଅକ୍ଟୋବର 30 ଗୋଟେ ଦଉନାହିଁ କି ଡେଡଲାଇନ ଯେମିତି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ର ସେଇ ଭଳିଆ ସେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ତମେ ସବମିଟ କରୁଛ थीसिस ସେମିତି ତାର ଡେଟ୍ ହେଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର और ଯଦି ବଢିଲା ଡେଟ୍ ବଢିଲା ଅକ୍ଟୋବର 30 ଭିତରେ ସବମିଟ କରିବ ଆଉ ଯଦି ତମେ जुलाई मासरे देबाकू चाहूछ एग्जाम ताले मार्च 31 रे किंबा जदी बढ़िला अप्रैल 30 की मे भितरे तुमको सबमिट करे अछि सो दैट से माने तबु कॉल करबे आ एथर को तो आरसी भुवनेश्वर से पूरा स्टिक करथिले जे आमे जो पिला माने देले नवंबर 30 की सॉरी तमर अक्टोबर 30 सेही पिलांकर ही परीक्षा जनवरी रे करिवो जो माने लेट रे दोचंदी आमे करिवुनी मैम ताले डिसेंबर में एग्जाम देबो ताले से कोन थीसिस ता केबे सबमिट करबो ताले सेही सेप्टेम्बर अक्टोबर रे जेमती असाइनमेंट सबमिट करछो अक्टोबर रे सबमिट करबो अक्टोबर नाले नवंबर रे हां तापर जे कि एग्जाम दा पई एलिजिबल हे परबो हां सेरा तमे टिके कांटेक्ट रखिथिबो आरसी भुवनेश्वर रे सारा केबे तांग नोटिस पचारिबो से सर केबे द डेट अछि आपन को से माने डेट टू डेट कोडी कांटेक्ट करिया नंबर कोडी मिली परबो सेटा तो सही मु पर्सनली तो जान नहीं कहा किए से चार्ज अछंती कोन बट से टिके मेल देखि किना किबा तमरो जे भी पठौछंती सब कोऑर्डिनेटर स्टडी सेंटर रे पचले तुम स्टडी सेंटर रे कहि देबे किंतु सेटा मु जानछि जनरली तम जेमति असाइनमेंट जेमति सबमिट करूछो थीसिस मध्ये तुमको सही बाइट सही डेट रे सबमिट करिवार अछि मैडम थीसिस केतरा सबमिट करियो पड़ियो सेकंड ईयर रे गोटिए थीसिस सबमिट करे भाइबाटा जो हबो तारो लिमिटेशन केते माने केते दिन भितरे भाइबा हुए से माने जेमति तमर थ्योरी परीक्षा सल्ला पर प्रैक्टिकल हुए सेमती तुमको थ्योरी धर डिसेंबर रे सरी गला जनवरी रे से माने तुमको कॉल करिवे भाइबा पई एमती माने बहुत गुडा पिलांकर नेम आसे ना किछि पिलांकर आसे सेमती जी ठीक टाइम रे सबमिट करतो ताको ठीक टाइम रे कॉल आसीबो हां जदी डेरी रे कला ताल ताको डेरी रे आसीबो देमने से नो भी आसी पारे नो भी आसी पारे माने माने आसीबोनी नेक्स्ट माने धर तमे जनवरी मास रे सबमिट करी कहयो मु जनवरी मास रे परीक्षा देबी बुझी पल्लो समाने ताकर डेट दैथियो त जे नवंबर की अक्टोबर भितरे अक्टोबर 30 ता हला तमरो लास्ट डेट जदी जे कहिथिबो तार उडे रूल्स माने सेमान को वेबसाइट रे आरसी भुवनेश्वर वेबसाइट रे कहिथिबो जे प्रैक्टिकल रो लास्ट डेट हला नवंबर 30 की अक्टोबर 30 तमे जदी जाय कि ना डिसेंबर 30 से देबो से माने मना करिवे हम परीक्षा करिबुनी कहबे तमे जाय कि नेक्स्ट जुलाई मास रे परीक्षा देबो कहबे आज्ञा मैम एगुडा फर्स्ट ईयर तो नाही ना फर्स्ट ईयर नाही बहुत लेट अछि एबे बोरी बार कोन अछि सेकंड ईयर रे हबो ये सेकंड ईयर रे हबो आज्ञा
Hmm? मैडम एग्जाम रे केमती माने को टाइप रो लिखिबा को पड़िबो माने को टाइप रो क्वेश्चन Exam. आसीबो Long को type टाइप ଆସିବ question ସବୁ. Long माने type question सबुडा ଆସିବ. लॉन्ग टाइप आसीबो Short notes ବି ଆସେ. लॉन्ग टाइप केते मार्क आसीबो Question ଦେଖିବା, question ଦେଖେଇବି last year ର. ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ। ଏ ପରୀକ୍ଷା ତ ଏବେ ତମର ନାହିଁ ଯାଇକି ଜୁନ ମାସରେ ଦବ। ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଠି ଅଛି ତମର, ସରି ଏଇଟା ନୁହଁ, ଷ୍ଟପ୍ ସେୟାରିଂ। ମ୍ୟାମ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିବି କି? ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ମୁଁ ରଖିଛି। କରିକି ରଖିଛ? ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରୁପ ରେ ଛାଡିଦେବେ ଟିକେ। ହଉ ରୁହ। ହଁ ହେଲା ହେଲା, ସେୟାର କରୁଛି। ହେଲା, visible or not? Visible, madam. ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ପଡ଼ିଛି। 600 words ରେ ତମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଟୋଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି ତମର 5ଟା ନା 4ଟା ପଡ଼ିଥିବ। ହଁ, 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି ହେଲା ଏକ୍ଜାମରେ। ଆଉ ସବୁର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ତାକୁ ତୁମେ 600 ୱାର୍ଡ, ଯେମିତି ତମେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛ 500 ୱାର୍ଡରେ, ଏଇଟା ତମେ ଲେଖିବ 600 ୱାର୍ଡସରେ ହେଲା। 600 ୱାର୍ଡସରେ ଲେଖିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଟୋଟାଲ ଡ୍ୟୁରେସନ ହେଲା ତମର 3 ଘଣ୍ଟା। 3 ଘଣ୍ଟା ତାର ହେଲା ଡ୍ୟୁରେସନ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱେଟେଜ ରହୁଛି 70%। ମାନେ ତମର ଆସାଇନମେଣ୍ଟଟା ହେଲା ତମର 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 30 ପଳେଇଲା, 30% ପଳେଇଲା ସେଟା। ଆଉ ଏଇ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷାରେ ତମର ରହୁଛି 70% ତମର 70 ମାର୍କ ମାନେ ରହିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ସେଇଥିରୁ ତମର ଗ୍ରେଡିଂ କରାଯିବ ହେଲା। ଏଇଥିରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କେମିତି ପଡିଛି। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ହାଉ ସ୍କୁଲ ଇଜ ଏ ସୋସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ, ଡିସ୍କସ୍ ଭେରିୟସ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ ସ୍କୁଲ ଏଜ୍ ଏ ସୋସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପଡିଛି। ଥିଓରିଟିକାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ସ କଣ, ତ ସବୁ ଗୋଟେ ବ୍ରଡ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଏଥିରେ। and explain the nature of inequalities in education, explain the explain the meaning of social diversity, discuss the challenges of social diversity in school. ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପିଲା ଆସିକି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତମେ କିଭଳି ଭାବେ ଏଜୁକେସନରେ କଣ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫେସ୍ କରିବ ଏଜ ଏ ଟିଚର ବା ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ। ହଁ, ତ ଏଇଟା ଦିଟା ଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଫାଷ୍ଟ 1 ଆଉ 2 ପ୍ରାୟ ଆସୁଛି। 600 ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ତମେ ଲେଖିବ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଯୋଉ ରହୁଛି, ଏଇଥିରେ କହୁଛି କଣ, ଏନି 4 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 6ଟା ଦେଇଛି, 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ, ସେଇଥିରୁ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଆଟେଣ୍ଡ କର। 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ଯୋଉ କରିବ, ଗୋଟାକୁ ହେଲା 150 ୱାର୍ଡସରେ ତମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। Compare between vertical horizontal mobility with suitable examples. Discuss briefly various types of returns of expenditure incurred on education. କୋଉ ଭଳିଆ ନା ରହିଛି, ମନିଟାରୀ, ନନ୍ ମନିଟାରୀ, ସେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବ। 150 ଟା ୱାର୍ଡରେ ତମକୁ ସେଇଟା ଲେଖିବାର ଅଛି ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ
लास्ट क्वेश्चन जोटा गोटे फोर्थ क्वेश्चन रोची सेटा गोटे एप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन सब बेले पड़ी थाए एप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन कौन जेमती कि से माने कहबे गोटे अलगा प्रकार तमरो एप्लिकेशन टाइप रो नुआ टाइप रो गोटे तमरो इनपुट जोथरे बेसी दरकार पड़थो ऑटोमेटिक प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करकिना लिखि परथो से भलिया क्वेश्चन गोटे से पकेइबो सेटा मध्ये 600 वर्ड थिबो एवं बेले बेले तार अल्टरनेटिव न भी थाए टोटल तार अल्टरनेटिव ही नाही केवल सेटा ही तुमको अटेंड करियर अछि तो सेतरे कोन अछि एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन discuss the statement in the light of theories of socialization theories of socialization आउ ए जो स्टेटमेंट रहिला एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन दीटा को तमे रिलेट करिवो आउ क्वेश्चन आंसर तमे 600 वर्ड भितर लिखिबो एई क्वेश्चन रो किछि ऑप्शन नाही पूरा कंपलसरी अल्टरनेटिव सब बेले लास्ट क्वेश्चन टा टिके तुमको निज इनपुट देकी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करिकिना डिफरेंट वेरिएबल को रिलेट करिकी तुमको गोटे एनालिटिकल वे रे लिखिबार अछि गोटे एप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन लास्ट आसीबो बुझियला आज्ञा मैडम सब वर्ष सही पैटर्न सब वर्ष सब एग्जाम रे सही पैटर्न रे क्वेश्चन आसी थाए फास्ट दीटा क्वेश्चन 600 वर्ड रे रहितबो तार अल्टरनेटिव गोटे गोटे रहइबो आ थर्ड क्वेश्चन तार चारटा क्वेश्चन रु 6टा क्वेश्चन रु तुमको 4टा क्वेश्चन रो आंसर करियार अछि 150 वर्ड भितर लिखिबो आ लास्ट क्वेश्चन ता जोटा रहउछि सेटा गोटे एप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन तमरो रहिते आउ काहर कोन डाउट अछि को क्वेश्चन पड़ुछि फास्ट फास्ट तो हैंडराइटिंग भल रहइबो लास्ट वर्ड को जदी स्पीड टिके खराब होय मैटर करेगी हां लास्ट क्वेश्चन उडा को टिके भलो से लिखिया को पड़िबो माने हैंडराइटिंग कुछ कोन ठीक तो सुबु नाइ टिके क्लियर हो नाही तम साउंड ता हैंडराइटिंग स्पीड चक्कर जदी किसी टिके खराब होय किसी मैटर करेगी हैंडराइटिंग लिखिबो आ कोन करबा समान तो सेमतिया गोटे प्रेस्क्राइब करी कि तांकर सेई केतेरा पेज थाए ऑलरेडी सेई पेज फिक्स थाए 20 टा ना 25 टा ता भीतर थिबो पेज सेई बळिया तमरो देइतियो किछि एक्स्ट्रा पेपर लिखि नै पारिबोनी हां ता भीतर ही तुमको बैलेंस करी किना लिखिबार अछि हैंडराइटिंग आ कोन करबा से हैंडराइटिंग तो सेमती लेखुथबो आ 3 घंटा भीतर लिखिबार अछि आ मैम जदि जणे नवेम्बर रे थीसिस सबमिट कला और डिसेंबर रे एग्जाम देला ताहले 2 मास खंडे भितरे आसी जीवो ना तार भाइबा पई ताको फोन आसीबो जनवरी मासरे ही तार फोन आसीबो कारण से माने जतरे डेट फिक्स करिवे से माने सेई पाखा पाखी सप्ताह आगुरु तुमको जणैबे तांकर की ठीक न थाए ना तांकर एक्सपर्ट की आसीबे की इवैल्यूएटर आसीबे को टाइम रे से टाइम देई परिबे को डेट रे से टाइम देई परिबे केते जण आसीबे केते जण पिला आसु माने केते जण एक्सपर्ट आसीबे पय माने कंसेंट देई छंती तांकर पुनी इवैल्यूएशन एक्सटर्नल जे भी आसीबे तांकर सुविधा अनुसार से माने डेट फिक्स करिवे से माने कॉल करबे ना मेल कर दियंती मेल भी करिवे फोन भी करंती प्लस तमे यूनिवर्सिटी रो जो रहिची वेबसाइट सेइटु मध्ये तुमे देखि किना किछि नोटिस बोर्ड तार रहिची सेइटु मध्ये तुमे देखि किना जानि परिबो हमर नेम आसी थिबो माने जनवरी रे हां 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 सेइतरे किछि चिंता करिया नै तापर तमर जो ग्रुप भी थिबो सांग मानकर ग्रुप रो भी तुमे किछि इन्फॉर्मेशन जानि परिबो हां आज्ञा हला नो सेइतरे किछि असुविधा नै आरसी रो आरसी भुवनेश्वर गोटे वेबसाइट मध्ये रहिछि सेइठी मध्ये सब जिंस तमरो इन्फॉर्मेशन गुडा को आसी जाय थाए तमे सेइठु पाई परिबो डिटेल इन्फॉर्मेशन अच्छा आउ की कोन कहबो को मैम हमरे जे मार्च 31 पे एक क्वेश्चन आ असाइनमेंट लिखबो ना आरसी भुवनेश्वर वेबसाइट ता मु चेष्टा करूची किंतु होउ नै आरसी भुवनेश्वर टोटल आसु नहीं हमरो हला सेटा तमे देखिबो आरसी भुवनेश्वर गूगल सर्च कले मध्ये आसी जिवो हां सेइथरे तमे देखिबो आरसी भुवनेश्वर को जेतले तमे खोजिबो सेतरे गोटे नोटिस बोर्ड फॉर स्टूडेंट्स थाए
ସେଇଠି ସବୁ ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ମ୍ୟାଡାମ ଥିସିସ୍ ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଗୋଟେ କେମିତି କପି ଡାଉନଲୋଡ କରିବୁ? ପଠେଇବୁ ନା 2 କପି ପଠେଇବୁ? ହାଁ ଥିସିସ୍ ଟା ଗୋଟେ କପି ପଠେଇବୁ ଆରସି କୁ ନା 2 କପି ପଠେଇବୁ ଆରସି କୁ? ଦିଟା କପି ବୋଧେ, ଦିଟା କପି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ କରିବୁ? କୋଉଠି ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା କୋଉଠି ମିଳିବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା କେମିତି ଜାଣିପାରିବ ତ? ରୁହ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ବତେଇଦେବି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ସେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ତାଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ଗୁଡାକ ସବୁ ରହୁନାହିଁ ସର୍ଭର। ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ ଯୋଉ ସିନୋପସିସ୍ ସବମିଟ୍ କରିଥିଲୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇକି ଆସିଛି, ସେଇଥିରେ ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ପେପର ଆସିଛି। ସେ ତାକୁ ପେପରଟା ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାକୁ ପୁରା ସାଇତିକି ରଖିବ, ଫୋପାଡିବନି। ସେଇଟା ତମେ ଯେତେବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ଥେସିସ୍ ରେ ସେଟା ଆଟାଚ୍ କରିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଗୋଟେ ଏଭିଡେନ୍ସ ରହିବ ଯେ ତୁମ ପ୍ରପୋଜାଲ ଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ 2ଟା କପି ପଠେଇବାର ଅଛି ନା, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ କରିଦବୁ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ। ଜେରକ୍ସ କରିଦବ, ଜେରକ୍ସ କରିବ। ଆଜ୍ଞା। କଣଟା ମ୍ୟାଡାମ ଦିଟା କପି ପଠା ପଡିବ? ଏଇଠି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ରେ ଗୋଟେ MESP ପେପର ଅଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ର, ସେଇଥିରେ। ଆମେ ଏବେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ନା? ନା, ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାଙ୍କୁ ହିଁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହୁଛି ଇଗ୍ନୋର ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ ରହୁଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ଚାଟ ବକ୍ସ ରେ ପଠେଇ ଦଉଛି ତାର ଆଡ୍ରେସ ଟା। ମ୍ୟାଡାମ ଏହାର କିଛି ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ବଗେରା PDF ଅଛି କି ନୋଟ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି? କଣଟା କହୁଛ ବୁଝିପାରୁନି? ନୋଟ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ଗୁଡା ଛଡା ହେଇଥିଲା, ଅଛି କି ଆଉ କିଛି ମ୍ୟାଡାମ? କଣ ଏଇ ପେପରର? ଆଜ୍ଞା, MS ନାଇଁ 14 ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ପଚାରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଚାଟ ବକ୍ସ ରେ ଛାଡିଛି, ଗୋଟେ ଦେଖ ଲିଙ୍କ ଟା। ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ର, ସେମାନେ ଏଇଠି ଏଇ ଲିଙ୍କ ଟାକୁ ନିଜର ଗୋଟେ ଯୋଉଠି ବି ତମେ ତାକୁ କପି ପେଷ୍ଟ କରିଦିଅ, ତମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଇଏରେ, ତ ସେଇଠି ତୁମେ ଦେଖିବ, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟସ ର ଆସୁଛି। ହଁ, ସ୍କୁଲ ଅଫ, ଏଇଟା ମୁଁ ସେୟାର କରିଦଉଛି ତମକୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତମକୁ ଆଉଥରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଏଇଟା କେମିତି ହଉଛି। ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କେମିତି ହଉଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଟା ପେଜ ଟା ସେୟାର କରିଦଉଛି, ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ, ସେ ଲିଙ୍କ ଟା କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତୁମର ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆସିବ। ତାପରେ ତମେ କଣ କରିବ ନା, ଧର ମୁଁ ଜୁନ 2024 ର ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ସେଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଜୁନ 24 ଆସିଯିବ। ଜୁନ 24 ଆସିଗଲା ପରେ ତମେ କଣ କରିବ, ଦେଖିବ ସବଜେକ୍ଟ ଆମର କଣ, MA ଏଜୁକେସନ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି କଣ BAG, BCOMG, ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆସିବ। ସ୍କୁଲ ଅଫ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ, ସ୍କୁଲ ଅଫ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ଆସିବ। ଆମର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସ୍କୁଲ ଅଫ ଏଜୁକେସନ, ହେଲା, ତମକୁ ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍କୁଲ ଅଫ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଜେଣ୍ଡର, ମାସ୍ ମିଡିଆ, ଲ, ଭୋକେଶନାଲ ଏଜୁକେସନ, ଏଇଭଳିଆ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲସ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି। ସେ ଭିତରେ ତମର ରହିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଦେଖେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ତମେ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବ। ସ୍କୁଲ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ, MA ଏଜୁକେସନ, ମାଷ୍ଟର ଅଫ ଇଂଲିଶ, ବିଭିନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟର ସବୁ ସେଇଠି ରହୁଛି ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ। ମ୍ୟାମ୍ ସେଇଠି ଆସୁଛି ଜୁନ 2024 ମାରିଲେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ। ହଁ, ସ୍କୁଲ ଅଫ ନାଇଁ ଏଜୁକେସନ ପଳେଇ ଆସୁଛି ସବୁ ତକ। ସବୁ ଆସୁଛି, ଦେଖିପାଇଲ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତମେ ଆଜ୍ଞା। ଖୋଜିବ ତାହେଲେ, ଆଉ ହେଲା। ଆଡଲ୍ଟ ଏଜୁକେସନ, PGDET, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାମ୍ ତମର
ଏଇଠି ମ୍ୟାମ୍ ମାଷ୍ଟର ଅଫ କେତେ ଦରକୁ ଏଜୁକେସନ ଆପଣ ଜୁନ୍ 24 କରିଦେଲ। ଜୁନ୍ 24 କଲା ସ୍କୁଲ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଆସିଗଲା। ସେଇଥିରେ ତମର ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ ବିଏଡ୍ ପିଲାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ତାପରେ ବିଏଡ୍ ରିଭାଇଜ୍ଡ, ତାପରେ ଆସିଲା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଡିପ୍ଲୋମା, ତାପରେ ଏଜୁକେଶନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ତାପରେ DLD, ଏମିତି ହେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ତମର MA ଏଜୁକେସନ ଆସିବ। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାମ୍। ହଁ ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ କଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଚାଲିଛି କି ମ୍ୟାମ୍? ଏବେ କୋଉଠି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ଏବେ କୋଉଠି ଚାଲିବ? ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ତମର? ନାଇଁ ଏବେ ତ ତୁମ ବୋଧେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବୋଧେ ହୁଏ ନା କଣ ଏପ୍ରିଲ ଆଡକୁ? ମାର୍ଚ୍ଚ ଲାଷ୍ଟ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ମ୍ୟାମ୍ ଏପ୍ରିଲରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ନା? ହୁଁ ଏପ୍ରିଲ ଆଡକୁ ହବ ନା, ଏବେ ନାଇଁ। ମ୍ୟାମ୍ PPT ଯୋଉ ଆପଣ ଯେମିତି କରି ପଢଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଇଜି ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାମ୍, ସେମିତି ଆମେ ମାନେ ଆଣିନଥିଲେ କେମିତି ଆଣିବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ବୁଝିପାରିଲେନି, ଭଲ ସୁବିଧା ଲାଗୁଛି ପଢିବାକୁ ତ ସେଇୟା କହୁଛ? ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ସେମିତି ସୁବିଧା ଲାଗୁଛି ପଢିବା ପାଇଁ। ବୁକ୍ ଟା ଯେତେବେଳେ ସଡନ୍ ଦେଖି ପଢିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟାର ମେନ୍ କଣ ମାନେ କଣ ସମେରୀଟା ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ହୁଁ ସେ ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ଗୁଡାକ କେମିତି ଆଣିପାରିବୁ ଜାଣିବୁ ମ୍ୟାଡାମ? ଏଇଟା ତମକୁ ଦେବି ତ? ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ମଡିଫାଏ କରିଦିଏ ଲାଷ୍ଟ ଗୁଡାକ କିଛିଟା, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ମୁଁ ତାକୁ ମଡିଫାଏ କରିକି ତମକୁ ପଠେଇଦେବି। ତମର କିଛି ଗ୍ରୁପ ଅଛି କି କୋଉଠି ସେଇଟା ପଠା ହେଇପାରିବ? କାରଣ କାଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଲାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ନେବି ନାହିଁ। କାଲି ଶିବ ସାର୍ କ୍ଲାସ ନେବେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କାଲି ଆଉ କ୍ଲାସ ନେବି ନାହିଁ। ଆଉ ଦିଟା ତମର ବ୍ଲକ ରହିଲା। ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ହେଲା 4, ବ୍ଲକ 5। ଏଇ ଦିଟା ତମର ଶିବ ସାର୍ କାଲି କ୍ଲାସ ନେବେ। ଠିକ ଅଛି। ଆମେ କେମିତି ପାଇବୁ ମ୍ୟାଡାମ? ଯଦି ଯଦି ହବ ମୁଁ ତମକୁ ଶିବ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ସେ ଦେଇଦେବେ ତମକୁ ଆଜି ଯିବି? ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଠି ତାହେଲେ ରହିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ ଅଲସୋ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।